लड़के इतना ज्यादा टाइम बाथरूम में क्यों स्पेंड करते हैं? I mean, one night stand is okay. What came first, the egg or the chicken? जब रखा घुटने तो दर्द होते हैं ना, अभी से शुरू हो सादिका। गए। Hi guys, this is Sadhika Sehgal and you're watching me on MensXP at Men's Locker Room. और हमारे आज के गेस्ट हैं अरुण सिंह, famously known as the Jhumroo. Okay, now very important question. Why the Jhumroo? इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है? Boredom. Because the scene was कि मैं 2015 में मुझे डिजिटल वीडियोस करनी शुरू करनी थी। मुझे नहीं पता था मैं क्या जॉनरा पकड़ूंगा, क्या कैटेगरी करना शुरू करूंगा। शुरुआत मैंने फूड से किया। आई वाज इन मुंबई बैक देन, तो मैंने सोचा फूड का करता हूँ। आई कीप अ चेक ऑन माई फूड। मैं ऐसा कुछ क्रेजी डाइट पे नहीं रहता, बट स्टिल आई कीप अ चेक। तो मुझे लगा यार कि मैं सस्टेन तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं इतना कहाँ बाहर जाके खा पाऊंगा या ये सब। प्लस ऐसा कोई मैं वो तो हूँ नहीं रणवीर बराड़ कि मुझे पता लग जाएगा बाहर जाके इसमें ये है इसमें वो है। तो आई थॉट कि चल शुरू करता हूँ, आज शुरू करते हैं एंड लेट्स कॉल इट समथिंग, बिकॉज तब ये बहुत रिवाज था कि जो भी तुम्हारा नाम है, जैसे सादिका फूडी, फूडी सादिका टाइप्स नाम, तो लाइक अरुण फूडी रख लिया तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज कल को आके मैं ये तो करने वाला नहीं हूँ। सो आई थॉट कि शायद मैं कल को कॉमेडी करूँ, शायद मैं ट्रैवल करूँ, और शायद मैं फूड ही कंटिन्यू करूँ, बट कुछ ऐसा रख लेते हैं जो तीनों को सूट करे। झुमरू का मतलब क्या है? सो एक तो किंगडम ऑफ ड्रीम्स यहाँ पे अपने गुड़गांव में है, गुरुग्राम में, वहाँ पे एक प्ले है झुमरू विच इज ऑन किशोर कुमार। सो ही हैड अ सॉन्ग राइट, झुम 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 झुमरू। सो दैट रियली रेजोनेटेड विद मी बिकॉज आई एम दैट goof ball. Yeah, you have that personality. Yeah, so I was like, yeah, that this goes really well with my personality. मैं कल को कुछ भी करूँगा तो this will go. Because you know, from the first look at your profile, मेरे को ऐसे लगता है कि यार इतना हैप्पी गो लकी इंसान मतलब कैसे पॉसिबल है? मतलब मैं और अच्छा Why is he so happy वाला vibe आता है? Exactly कि भाई मतलब मेरी लाइफ में 100 अलग अलग टाइप की भसड़ चल रही है, बट ये बंदा हमेशा इसको ये खुश है, ये नाच रहा है, ये ट्रेंडिंग गानों पे अपनी रील भी बना रहा है, और ये इतनी बढ़िया मिमिक्री कर रहा है, इसको कोई साला ट्रोल तक नहीं करता। आपके ट्रोल ढूंढने में हमारी भाई मतलब जान निकल गई कि एक साला ट्रोल नहीं मिल रहा, कि इसको ट्रोल भी कोई नहीं करता। या दैट्स वेरी स्वीट। ये मैंने भी नोटिस किया, लेकिन ये हमेशा ऐसे नहीं था, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं मीडिया में हूँ, काफ़ी सालों से रहा हूँ। आई विल बी कंप्लीटिंग या मोर देन लाइक 12-13, दिस माय 13th ईयर। वो मैंने देखा है वो चीज़ भी, बट व्हेन दिस केम अप, दिस अकाउंट ब्लू अप, तो मैंने भी नोटिस किया यार दे आरंट एज मेनी हेटर्स। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो मुझे ये भी लगता है कि ये क्रिएटर इकोनॉमी कह लो, या फिर ये क्रिएटरशिप थोड़ी अब आगे नेक्स्ट लेवल आ गया है। अब लोगों को भी, अब यूजर्स को भी पता है कि ठीक है यार, अगर मुझे नहीं कुछ पसंद आ रहा, या फिर इट्स ओके टू मूव ऑन। बेसिकली आई थिंक हम लोग एज एन ऑडियंस भी थोड़ा मैच्योर हुए हैं। पहले तो ये था कि जो इंटरनेट पे दिख रहा है, बिकॉज इंटरनेट है तो हमें गाली दे के ही जाना है, ये एक नॉर्म हो गया था। सेकेंड, आई थिंक पंजाबी में बात ही है वो कि आप वो प्यार नजर आता है, और लोगों को भी वो देख के यू नो द थिंग इज कि ओ यार दिस इज स्वीट। बट आई नो, मुझे कभी कभी लगता है लोगों को लगता होगा, स्पेशली इफ यू गोइंग थ्रू अ लो फेज, सो वो थोड़ा लगता इरिटेटिंग तो लगता होगा। इरिटेटिंग तो देखो लगता है। उसके पीछे सच्चाई ये है कि शायद वो गाना गाने से पहले मैं भी सैड था, बट दैट्स माई थेरेपी। अब मेरे साथ शायद नहीं कुछ अच्छा आज हुआ एक दिन में, कोई वीडियो ऑफिस में मैंने की जो नहीं चली, यू नो क्रिएटर प्रॉब्लम्स, और किसी से बहस हो गई, बट मुझे लगता है यार ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं, ये गाना एंजॉय करते हैं, एंड दैट्स व्हेन आई एम ऑन कैमरा एंड instantly I feel happy. But okay, let's go back to your point that you just made कि you know क्या पता कि वो रील बनाने से पहले शायद मैं भी सैड था. So you know which is what I was saying कि पहली लुक में तो ऐसे लगता है that you know there is nothing wrong in your life, that you're happy, you're killing it at work, you're killing it in social media, you're probably killing it in you know personal life. People don't know, but we'll find out. Is that really you? और कहते हैं ना कि जो इंसान सबसे ज्यादा हंसता है वो सबसे ज्यादा गम भी वही छुपा रहा होता है। मुझे ऐसा लगता है उसका भी ना एक मेरा नज़रिया ये है कि यार शायद नहीं ठीक हो रही होंगी, बट फिर भी दिस इज ऑल दैट आई विश फॉर। फॉर एग्जाम्पल, द डे आई एम क्रिबिंग अबाउट माई जॉब और एनीथिंग, और अ वीडियो और एनीथिंग, तो मुझे लगता है यार दिस इज पार्ट एंड पार्सल। यही तो मैं चाहता था कि मेरा एक जर्नलिज्म में करियर हो, मैं चाहता था कि मैं एक क्रिएटर हूँ, तो वो है तो है ना। सो फर्स्ट बी थैंकफुल, तो दैट्स द एटीट्यूड दैट आई हैव। आई नो आई एम साउंडिंग वेरी प्रीची, बट इट वर्क्स फॉर मी। दूसरा, मैं हूँ ईजिली खुश हो जाता हूँ। जैसे अभी मेरे लिए बोलना बहुत आसान है कि व्हेन यू आर लो जस्ट मेक अ वीडियो, बट प्रॉब्ली दैट्स नॉट एवरीबॉडीज पर्सनैलिटी, दैट्स माई पर्सनैलिटी। तो वो कहीं ना कहीं एक पर्सनैलिटी का भी पार्ट है। आई एम श्योर आई सप्रेस ऑल्सो, मुझे नहीं पता लगता है वो, बट मैं सबकॉन्शियसली शायद कर रहा हूँ सप्रेस। वही जैसे जिस दिन मैं नहीं अच्छा फील कर रहा और मैं गाना सुन लेता हूँ,
मैंने वो सप्रेस ही किया है. बट ठीक है, कभी कभी रोने का मन करता है, मैं रो लेता हूँ, तो ऐसा नहीं है और कि उसमें कुछ बुरा नहीं है. हाँ, बट मैं डेफिनेटली बॉटल अप करता हूँ. बट फॉर एग्जाम्पल एक हफ्ते में फिर वो बॉटल खोल के खाली भी कर लेता हूँ. तो ऐसा नहीं है कि मैं सालों का बॉटल अप कर ही जा और रहा फिर हूँ. वो एक ही बार आउटबर्स्ट होता नहीं है. नहीं नहीं. But I think that's good. That's healthy. And I'm sure it might work for a lot of other people as well, right? Because अच्छा एक ना गिल्ट फैक्टर भी आ जाता है बहुत सारे लोगों में कि यार वैसे तो लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं बट हियर आई एम पुटिंग एवरीथिंग ऑन द साइड एंड डांसिंग. कभी कभी वो गिल्ट वाली चीज़ आ जाती है. बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे वट एवर वर्क्स फॉर यू, वट एवर हेल्प्स यू फील बेटर एंड लाइटर. या आई थिंक वन डे एट अ टाइम वाली बात है कि मैं आज का देखूंगा. अभी वेरी रिसेंटली आई रियलाइज कि ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं और वो हमेशा रहेंगी. दैट्स हाउ लाइफ इज. बट जो अभी मेरे प्लेट में है, हाउ डू आई मेक बेस्ट ऑफ दिस. क्योंकि एक टाइम वो भी था जब हमें ये प्रॉब्लम्स चाहिए थी. एक होता है ना कि मतलब वही. प्रॉब्लम्स भी इंसान को चुन के चाहिए होती है कि यार ये वाली प्रॉब्लम नहीं बट ऐसी वाली प्रॉब्लम इसके साथ आएंगी तो वो बेटर And है. honestly, the reason that I am able to pull through these things is that these are happy problems. Privileged problems. Yeah, we are pretty privileged. So I know जब आप sad होते हो तो it's a very bad strategy कि आप उनकी तरफ देखो जो आपसे भी बुरे हाल में. That's, I know it's a very bad strategy. I don't do that. But I just look at my own journey only कि यार पहले तो ये था ना, now you're here, now you have these problems because you wanted these good things. I've accepted कि ठीक है, कभी कभार आएंगी. हाँ हैंडल कर लेंगे, पंजाबी है. दिन में you being an anchor, you're reporting, you're doing all of your journalism stuff, and then in your free time or whenever you get back home, you're making reels and content. When do you get time for yourself? Apart from those 2 hours that you spend binge watching reels, where in the day do you find time for yourself, or do you really not? तो मिल जाता है यार टाइम. मैं एक तो लू में बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ. अच्छा, रील्स लड़के इतना ज्यादा टाइम बाथरूम में क्यों स्पेंड करते हैं? आज उसका ये धारणा लेकिन लड़कियों के बारे में है ना. But when they're getting ready and all, I still get कि चलो ठीक है, maybe girls are a little more finicky. उनको होता है कि नहीं मैं बाल भी ऐसे कर लूँ, मैं ये भी ऐसे कर लूँ, लड़कों को मुंह धो लूँ, कंघी मार लूँ. पर लड़के जनरली अलग से 30 सेकंड में नहा के बाहर आ सकता हूँ. मेरे घर वाले पूछते तू नहा के आया भी है. ये सुपर पावर होती है आई थिंक. तो I'm really quick, but हाँ, when I'm pooping then I take quite a lot of time. So that is your me time. Yeah, when I it's think in the loo. there's just something nice about you just being locked in a room, which Sitting with the pants down. which sometimes becomes a luxury. Yeah. For you. Do you go to gym? हाँ यार, आजकल रेगुलर नहीं हूँ, but I do. अच्छा ये वैसे वाला है कि नहीं मैं जाता हूँ, मैं शुरू करूँगा, मैं कल से जाऊँगा. मैं आ गया था, मैं एब्स तक आ गया था. मेरे एब्स दिखने शुरू हो गए थे, उस फेज पर आ गया था. Now my aim is to go back to that. कि एक बार वो जहाँ में मैं वो पहुंचा था वो एब्स दोबारा लानी है. So okay, so one question that actually the viewers had for you, and we saw it, like we found this in a thread. You are famous for doing Punjabi uncle videos, ठीक है, and you do it really well also. You've picked the right nerve कि हाँ पंजाबी uncle पार्क में हो या गाड़ी में हो या धूप में हो, you know what to do. But there are a few other creators also, I think, जिन्होंने similar content बनाया है, and one in particular, your fans did not really call him out, but they were curious to know because Vishnu Kaushal also, covered a few reels around the same genre कि हाँ ठीक है पंजाबी uncle, पंजाबी dialect, पंजाबी fun and all of that. So your fans really would like to know कि who did it first? Like, do you feel like kabhi, did this thought first I ever have to cross? address that I love Vishnu's reels. And we keep talking also. And ये सवाल मैंने भी कई बार सोचा हुआ है कि यार अंकल वाला did I start, did he start, or but I'd never. What came first, the egg or the chicken? But I never got time to see like who started first. And we get compared very often. Yeah. And उस पे भी comment में tag होता है, ओ पाजी this is you. मेरे उस पे होता है, ओ पाजी this is, उसको tag कर रहे होते हैं लोग. But I think the thing is कि पंजाबी कल्चर में वो चीज़ें हैं कॉमन जो हमेशा लोग पिक कर लेते हैं. तो मैंने कभी भी नहीं ये सोचा कि उसने किया या मैंने किया, क्योंकि हमारे अलावा भी और बहुत लोगों ने अंकल कंटेंट किया हुआ है. हमारे अलावा भी बहुत सारे लोगों ने NRI एक्सेंट किया हुआ है बिकॉज इट इज़ पॉपुलर इन पंजाब एंड दैट मार्केट. सो लाइक ही ऑल्सो डज NRI वाला थिंग एंड आई ऑल्सो डू दैट NRI अंकल. 100 other Punjabi creators have also done in the past or probably will keep doing, and even dad and let's say mom. Now who started mom videos? Yeah. Every woman is wearing that chunni. Everybody is doing it, right? Yeah. So I don't know, but I think probably we get compared because we are in the same market, as in we are majorly catering to Hindi market as Punjabi. As Punjabi, yeah.
So probably that's why we. Before we joined in, you had 260,000 followers, right? And I'm sure it must feel great. Fan following here, Yeah, people are 2.5 looking लाख up to your लोग देख work. रहे हैं. इस पूरी जर्नी में have there been, you know, those one or two people जिनका follow आपने देखा, and you know, because you keep looking, right? वो होता है, और 2-3 हाँ, लोग होते हाँ, हैं जो. तो वो 2-3 लोग कोई रहे हैं जिनका follow Yeah, देख के yeah, लगा कि यार this is my I have arrived moment, or you know that you've been at one point enamored by. किसी ने enamored था, बट ऐसा नहीं था कि काश ये मुझे फॉलो करे, Of ऐसा course नहीं था. बट उनका फॉलो देख के मन को कहीं अच्छा लगा Of कि यार course, Karan Johar, Ooh. Badshah. When these guys followed, I was like, oh, okay, nice. अब मैं आ गया, अब मेरा टाइम है. No, not that अब मैं आ गया, but it's just that you've not seen them in that sphere, right? They are film people, they are music people, so automatically it's like वो अलग planet में रहते हैं, मेरा planet अलग है. But when you see them on your planet, you're like, nice. It's not that okay. This was I did define it as a monumental thing in Yeah, my yeah. career, or it definitely makes you feel happy because हम लोग Bollywood lover and you know all of that. We've grown up watching Bollywood films. Yeah, so like if a Richa Chadda comments, I feel happy about it. You ever had a conversation with them over I DMs? DM'd Vicky Kaushal because he follows me, and I DM'd Paji consistent collab करेंगे. He was so sweet to say yeah. And later I was like, Vicky Kaushal क्यों करेगा collab मेरे साथ? But then I was like, why not? Like I just wanted to put it out, and I said पाजी जरूर से दिल्ली आओ या whatever, कभी भी opportunity हो या collab करेंगे. And उन दिनों में मैंने शायद कुछ सुखशिंदर शिंदा का गाना डाला था, and my caption was Shinda rocks, something like that. And he said हाँ पाजी करेंगे, and yes, Shinda rocks. It's like nice, and it's really sweet. To, you know, give a heads up to our female viewers, are you single or are you dating? यार ये बिल्कुल ही ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म में पूछ लिया आपने. आई एम सीइंग समवन. Okay, so you are seeing someone. तो फिर लड़कियों जो इन्होंने अभी बोला कि वो कमिटमेंट फोबिक नहीं है, उसका आप बट कुछ नहीं प्लीज कर यार अपने सकते. प्यार में मत कमी करना यार. अब फॉलोअर्स कम भी हो सकते हैं. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं. मैं डीएम में अगर कोई इफ समवन इज अप्रोचिंग, आई टेल देम. And that is good also. या So how long has it been? It's been a while or it's मोर देन recent? 2.5 years. So now if you feel ready, जैसे आपने बोला कि मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ यार शादी आदि करने के लिए, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कर लेंगे. कर लेंगे. अच्छा अभी सिट कियारा की हो जाने देनी थी ना. एग्जैक्टली. लाइमलाइट उनसे ना छिन जाती. ओके सो कभी गर्लफ्रेंड ने आपको ये नहीं बोला, या फिर जरूरी नहीं है इस वाली ने, पहले वाली ने भी, कि यार ये क्या काम है, ये कैसा कंटेंट बना रहे हो, सबको समझ नहीं आता ना पहली बार में. डेट किया है. अच्छा ओहो. बिकॉज यार तो मैं ये भी बता रहा था कि कमिटमेंट फोबिक मैं इसलिए भी नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत फोकस्ड हूँ इसमें, तो मेरे पास नहीं है टाइम वेस्ट करने के लिए. मुझे है कि भाई अगर कुछ फ्यूचर होगा तो मैं डेट करूंगा, बिकॉज नहीं है मेरे पास टाइम तो वेस्ट हुकअप करने कल्चर वगैरह इस पे. दैट इज ओके. आई मीन वन नाइट स्टैंड इज ओके, बट यू नॉट इन दैट जोन. but I can't be in that zone where I am following monogamy but also not getting anything out of it. You understand? Like, yes. okay, if you are clear it's just gonna be a hookup thing or friends with benefits, I'm game. But if you're thinking ki let's have a relationship but we don't know where it's going. Although ऐसा कभी हुआ नहीं that my partner said कि no I don't want the eventual marriage thing. But मेरा तो हमेशा ये लॉजिक था कि अगर मैं if I get into a relationship then it has to have a conclusion because then it's waste of time. नहीं हाँ मतलब नहीं है मेरे पास टाइम उतना. तो मैंने अक्सर मीडिया में एक there was a non media person जिसमें I think मैं 1.5 महीने में मैंने realize कर लिया this is not happening. But I don't think it has got anything to do with profession or anything. Okay. It was just not an ideal match. Wow, एकदम से हम स्प्लिट्सविला पहुंच गए. But it was just not an ideal match and I was like बाहर निकालो वो यहाँ से. क्योंकि शायद वो समझ नहीं पाते ना, एक तो हमारा एक तो इंडस्ट्री इतनी ज्यादा. I don't know यार है. आप वही मैं बोल रहा हूँ कि if it is not because she was not from the same profession, मुझे लगता है समझने वाले यार if you hit off with someone तब तो you hit it off of course. ऐसा नहीं है. ये हमने अपने लिए बना लिया इजी करने के लिए कि सेम प्रोफेशन ओनली वर्क्स बिकॉज वो इसलिए होता है कि वी एंड अप बीइंग विद पीपल फ्रॉम सेम वही मेरे जैसे लोग तुम्हारे जैसे लोग जो अगर हम 11 बजे तक यहीं पड़े रहेंगे यू विल एंड अप डेटिंग समवन हु यू आर वर्किंग विद. या ओके बट ऐसा कभी डर नहीं लगता बैक ऑफ द हेड में या फिर ओवर द टाइम कभी लगा नहीं कि यार यू नो अभी भी पेरेंट्स तो उसी माइंडसेट के हैं ज़्यादातर, ऑफ कोर्स उनका भी वो इवॉल्व हो रहे हैं, बट एक वो वाली चीज़ होती है ना कि जब किसी लड़की का हाथ मांगने जाते हो तो ये बोलना कि हम डॉक्टर हैं या फिर हम इंजीनियर हैं, एक बहुत ही अलग वो एक वो मिल जाती है कि हाँ ठीक है यार सेफ्टी नेट है ये मेरा.
तो जब उनको ये वाली चीज बोलते कि यार मैं तो कंटेंट क्रिएटर, मेरी पर रील्स जब और उनकी अपनी ऐसे, बेटी मीडिया में तो इट बिकम्स ये फिर इजियर आई थिंक यू प्लेड वेल, गुड गेम. देन इट बिकम्स इजियर So वो that भी is तो the बना रही hack. है वीडियो, वो भी तो सर कर रही है. लड़की को भी साथ में खींच लो, दोनों मिल के बनाओ. But it definitely helps if you have your partner in the same profession. So जब से like ever since you've grown such a large following, तो have you felt that now women react to you differently as opposed to when you were still in that process of climbing that ladder? So I tasted it थोड़ा बीच में when I was a radio jockey. I tasted that on the city level, and I would see that that appreciation. मुझे ऐसा लगता है कि it's never about number of followers you have, and that's why women look at me in certain way. It is always about what you're giving them, right? So you've What never been approached just because of that, like. I'm sure मुझे कैसे पता लगेगा वो इसलिए अप्रोच कर रही है नहीं. Yeah, I mean मुझे लगता है कि it's the personality, it's the vibe that you give. मेरे लिए एक एडवांटेज ये हो जाता है कि वही हैप्पी वाइब really works for me. Yeah. कि वो अब पता नहीं वो मिथ है या नहीं, that you can tell कि वही लड़कियों को वो लड़के अच्छे लगते हैं जो हंसा दें और something like that, और Yeah, वो I happy think और लड़कियों का ना, लड़कियां चाहती होती हैं कि उनको एक टाइप हो कि हमें ऐसा चाहिए, हमें वैसा चाहिए, बट एट द एंड इफ यू कैन मेक हर लाफ देन यू विन इट. फिर the moment she can sit with you for hours and she can laugh. So maybe that's why it works. I think that's why it works, that happy vibe that I know even if I'm doing a Punjabi song, I'll beach mein crack a joke or whatever. Probably that works. I don't think it has got anything to do with number of followers. Right. It's about your personality and what you bring on the table and you serving them. While talking about serving, so you apparently took a dig at one of your I didn't take a dig first. I didn't take... But it came across as a dig. Sure. So was it because... First of all, we are saying dig, D-I-G. So like, do you think that was you going a little too personal? Did she come back and like call you out for it? No. I think she had just not gotten over, and it's absolutely fine. I think it came from that space because A, I did not take a dig at her. B, it was a friend of mine, a female friend of mine, who said something where she said your ex something, and probably that triggered her. But if I was her and had moved on, I would have never messaged because the first reaction is कि अकेली मैं थोड़ी ना थी. But probably that gave her a chance to message, and then she messaged because उसके बाद से the conversation that happened, it was all venting out, and I'm like कहाँ से बात शुरू हुई थी, ये कहाँ पहुँच गई. But the point is probably she wanted to vent it out, and she really vented it out, and I just kept a reply with thumbs up, okay. That is the most annoying response anybody can ever give. But when you don't want to patch up, you don't want to get into conversation, right? So you're not a believer of going back to your exes. It's if you want to patch up, sure, go back. But if you don't want to, then don't indulge in a conversation. Then a thumbs up works, guys. Because if you are an emotional person at this moment and you are venting it out, if I don't have to continue this, I have to escape, right? I have to say, sure, I get it. Yes, very nice. Okay, I'm sorry. You can't be like, but तूने भी ये किया, because then it's a chain. तब तो फिर it's a match. Yeah, then वो आपको पता है कि वो आप 2 घंटे conversation करोगे, फिर आप मिल लोगे, and then वो cycle शुरू हो जाएगी. Yeah, तो अगर आपको नहीं करना है तो thumbs up. Thumbs up works. So you're turning to be 30 now. Or are you already 30? I've turned 30. You've turned 30. Yeah. What are the kind of pressures do you feel at this age now? Because 20s में होता है कि हाँ चलो ठीक है, 20s में कॉलेज भी खत्म कर लिया, पहली जॉब भी आ गई, सेकंड थर्ड जॉब तक समझ भी आ जाता है क्या चल रहा है. बट जब 30s में एंटर करते हो, how do things change for men? First, I think pressure कभी नहीं जाता, कभी खत्म नहीं होता. There's always a new thing at your hand. But I'm sure as a man, जितना मर्जी मैं बोलूँ कि हमने stereotype किया है, हम लड़कों को ये करते हैं, वो conditioning और वो stereotype का एक वो भी है कि somewhere in like आपके back of mind में है कि you have to be a provider. वो है मेरे मन में. मुझे वो ज़रूर लगता है, listen, if I have to, since you asked when are you getting married, so I think, listen, if I have to start a family or if I have to get married, that provider instinct really comes out. But would you feel kind of unsettled if that provider instinct or if that provider feeling would be provided by your better half? No, I'm absolutely fine. I'm more than happy. But I'm saying that instinct is there. मुझे भी नहीं, वो मैंने नहीं बनाया. But आपका भी जाएगा नहीं कि उसका जितना आना है आ जाए, मेरा नहीं जाएगा. वो मेरा natural है, वो मेरा दिमाग ही वहीं चलता है कि oh listen, you have to have that sorted, you have to, and because I started working early and I'm a disciplined, focused guy,
I can say I'm at a very comfortable position at this moment. तो मुझे वैसा वाला नहीं है कि ओहो what do I अब ये do भी करना है। कि अब मैं ये नहीं सोच रहा कि अब मुझे क्या करना है. I know मुझे क्या करना है और जो मैंने प्लान 30 के लिए किया था वो मैं कर चुका हूँ achieve and I'm at a comfortable position. But that leap that you take कि okay now if I have to go to next level now things can't go wrong basically. पहले क्या है कि आप जब अकेले होते हो या फिर आप जवान हो तो आपको ये है कि ठीक है यार ये नहीं वर्क किया तो ये दूसरी चीज ट्राई कर लेंगे. when you go to that level where you're turning 30 you're getting married and if you're getting married at 30 you want to have your kids also when that thing starts then there is never a plan वो B स्कोप फॉर गोइंग रॉन्ग वो कम होता जाता बहुत कम होता जाता है. यू कांट बी लाइक कि कर लेता हूँ शुरू. इफ इट डजंट वर्क आउट आई विल डू. मे बी कुछ लोगों का है वो स्टैमिना टू डू दैट बट आई फील अ लिटिल दिस थिंग कि है. हाँ, रिस्क एपेटाइट थोड़ी कम होती है जैसे जैसे बड़े होते हैं. आई फिगर. एक तो मैं वैसे बहुत ही आई यूज टू एस्केप फ्रॉम टेलिंग माई एज. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम बट इंस्टा में जब भी कोई पूछता है आई नेवर रिप्लाई बिकॉज मुझे अच्छा लगता था दिस ये सोचते रहेंगे. हाँ, सोचने दो. not that I have a problem because otherwise I wouldn't have been like sharing here but yeah Insta में I'm always like ha ha la 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 और मैं कोई अंकल जो मार देता हूँ उम्र अच्छी की रखे आ जी. बट नहीं, वैसे उम्र में रखा भी कुछ नहीं है बट रखा ठीक तो है है यार जब रखा तो घुटने है. दर्द होते हैं ना अभी से शुरू हो गए. it's just the dad in me. Just the dad in you. People call you an old soul, but are you really? I am. Yes. Yeah. बुढ़ाऊ हूँ मैं घर का. रात को 8 My बजे mom मन calls करता me है. बुढ़ाऊ. Yeah. बुढ़ा है तू. Because मुझे ठंड भी ज़्यादा लगती है and I'm like हो थोड़ा cautious होके चलता हूँ कान भी तो ढक दोस्त लेता हूँ. मजाक नहीं उड़ाते? उड़ाते हमेशा but they also like कि okay he's the responsible one types. तो ठीक है मुझे भी मज़ा आता है. चलो अब बातें तो बहुत हो गई, but now we have some fun and games lined up for you. So let's start with the first one. Let's go. Okay. So in this you'll have to answer with your top 3. All right? Top 3 songs. Lemonade, Excuses, Top Notch Gabru. Oh, nice. Top 3 actresses. Sargun Mehta, Simi Chahal. I'm gonna name all Punjabi. एक Bollywood. Alia Bhatt. Alia Bhatt. All right. Top 3 content creators. I'll say content creators I like. Kusha. Dharna. I love everybody though, I must say. Competition का नाम लेते हुए दिल दुखता है ना. नहीं people pleaser in me is ओहो, like सबको कैसे प्लीज कर. एक स्लॉट बचा है, किसी एक को नाराज प्लीज हो कर दो. जाएंगे. Okay, we'll go with आपका jug. So Top 3 food items. first is street food में whatever you wanna say. चाट पापड़ी, Chaat, भेल. papdi, whatever. Mexican में quesadillas. Punjabi of course. I don't like मक्की की रोटी सरसों का साग but I like छोले सरसों का भटूरे. साग with I hate छोले भटूरे. Oh, really? Yeah, don't cancel me for this. But I love roti पे white butter and saag. Oh. Heaven. I feel you. 3 things that you don't leave your home without. Car keys, mobile phone, wallet. Very boring answers. और अच्छा क्या? अच्छा, इन तीनों को छोड़ के कोई ऐसी 3 चीजें जिसके अलावा कभी घर नहीं छोड़ते. My pants, my charger. You phone पहले Good, interesting. point Yes, out किया yes, था. yes. And food bag. टिफिन होना चाहिए. टिफिन्स होते हैं मेरे. एक में मखाने, एक में कुछ और चावल दाल ऐसे. Okay, now let's move on to the second game. So this is called the word association game. I will say a word and very quickly you'll have to say I whatever don't want to comes say to your anything head. inappropriate. Say everything inappropriate. I'm being the devil's advocate here. So are you ready? And you can't think. I haven't been thinking all this while by the way. प्यार, दोस्ती, दिलजीत, love, प्यो, daddy. बुल्ट, I want to have one. प्रायोरिटी, Career. बड़ा दुख से निकला इतना No, I सोच don't के know. भी. I don't know what. Like my Confused. priority. Okay. Sex, Sure. सोनम बाजवा, I like. I know, like people are crazy after her, but I am more a Simi Chal, Nimrat Khera boy than Sonam Bajwa. So now people have 2 things over which they can cancel you: chole bhature and Sonam Sonam Bajwa. Bajwa. Yeah, because I think she gives a very urban vibe and So I she doesn't like. give that. I think a lot of
boys, in fact, in men. She's pretty. She's very beautiful. So for sure. I mean, she's talented as well, and the way she speaks, everything. But I don't know. I mean, let's go with not my type. Pindka, Not okay, my not- type. not your type. Not that I am a Pindka person. Not that I am not urban. I'm very urban. But yeah, not my vibe. Dream. To make it bigger. Nice. I'm talking about the career. So now, the very last segment with you. It's called Up Close and Very Personal. And you'll know just why we call it that. First question. What was the last thing you Googled? I think अभी मैं कुछ देख रहा था. GST deadlines. Chalo, we all can relate. Which is the last picture that you clicked or the last screenshot that you took? I took आप लोगों की story. Oh, that is sweet. Yeah. That is sweet, guys. He's capturing us. Good. BTS. BTS. The Okay. Mangalsutra moment. Anyway. Have you ever slid into somebody's DMs? Of course. और क्या DM का काम क्या है और किसी को चिट्ठी भेजनी है जब अब पोस्ट ऑफिस वहाँ खुला है तो आप भेजोगे ही तो. And has it ever worked? It has. Yeah. I mean, it has worked when I wanted it to work. So, yeah. Nice. And who's, like, what famous person's DMs you've slid into but not Vicky Kaushal? Because we already know that. तापसी पन्नू? Really? Did she reply? No, she did not. और फिर मैंने unsend भी कर दिया. And eventually I shot So you're that guy who unsends it. But I didn't send a creepy message. She was in Delhi. I said, listen, we want an interview with you. She saw the message, never replied. And then I unsent it. And eventually I shot a show with her, like one full episode. And it wasn't awkward at all. मैं थोड़ी ना बोलूँगा कि मैंने आपको मैसेज किया था, मैं वो गधा हूँ, देखो. And of course she would not say कि तुमने वो मैसेज किया था, मैंने देखा और मैंने रिप्लाई नहीं किया. So I was like, तुम भी कुछ नहीं बोलो, मैं भी कुछ ना बोलूँ. But she said, oh, I love your... She keeps posting my dad videos. So, yeah, that she appreciated, which was good. Not bad. Nice. Nice. Sweet. She's very sweet. Good save. बहुत कम celebrities अब बचे हैं जिनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है. She's one of those. So. Oh, nice to know. किनसे मिलकर अच्छा नहीं लगता? Oh, नाम थोड़ा ना ले सकते हैं. Yeah, because celebrities are so guarded now. That is true. But we're really glad that you were not guarded today and that you gave the viewers a lot of content to chew on. You made me feel comfortable. Thanks. Oh, you're welcome. And on that note, here's Friendship to our over? friendship. Yes, friendship Over? over. Friendship over. चलिए, thank you so very much. Thank you so much. Okay जी, bye. अब मैं uptight हो जाता हूँ और Uptight and not very अब नहीं बताने personal. वाला मैं अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या है. Oh, really? Because we're not friends anymore. Oh, damn.